motion in a circle. We have here a circle like this. Okay? And for example, this is the center of the circle, and we take one of the arc lengths of the circle like this. This is the arc length that we have. We call that S. This is the center of the circle, as you can see. This is the radius R. This is also R. This angle here is theta, because that is subtended at the center of the circle, right? So this angle in radians, because we are talking about the circular motion here and we deal with radians here, we also deal with degrees, but radian is included. And the first question usually is about the radian, the defined radian, right? So what you'll write is that one radian or AD is defined as the angle subtended at the center of a circle by an arc equal to radius of the circle, right? The angle is 1 radian. This angle that you can see is 1 radian, is defined as the angle subtended at the center of the circle by an arc. This is the arc that we have. We call this S. Arc equal in length to the radius of the circle. ठीक है जी? इसको हम define कैसे करते हैं? We have S here. We can write here theta as S over R. This is the formula that we have for the radian. S is the arc length. R is the radius. Theta is the angle in radians. ये एंगल 1 रेडियन कैसे होगा? ये एंगल 1 रेडियन तब होगा जब ये आर्क लेंथ फॉर एग्जांपल आपके पास थी 20 सेंटीमीटर और रेडियस भी आपके पास 20 सेंटीमीटर था. When the arc length is equal to 20, for example, and when the radius is also equal to 20, you get the answer as 1 radian, right? This is what we get. 1 radian is defined as the angle which is subtended at the center of a circle by an arc which is equal to the radius of the circle. Right? If we have an entire circle here, like this, the angle here is 2 pi radian, right? This angle of the entire circle is 2 pi radian. And this 2 pi radian is equal to, in fact, 360 degrees. You know this very well. 2 pi radian is, in fact, equal to 360 degrees, right? ठीक है जी? तो ये 2 पाई रेडियन 360 के इक्वल क्यों है मैं आपको अभी बताता हूं. पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? Why is this angle here equal to 2 pi radian? Do you have any clue why this angle here is equal to 2 pi radian? जो सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस होता है 2 pi r. ठीक है, आपके पास ये जो सर्कल है, the circumference for this circle is 2 pi r, right? Are you getting what I'm saying? And you know that theta is given by the arc length over radius. So if radius is r for the circle and the arc length of the entire circle is 2 pi r, because that is the circumference that we are talking about. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि that arc length is
In fact, what the circumference of a circle, and we have the radius here. So this becomes 2 pi r over r. This r is going to cancel with this r, and you get what? You get 2 pi radians. So 1 radian is defined as the angle printed at the center of a circle by an arc length which is equal to the radius of the circle. Theta is s over r, and 2 pi radian is equal to 360 degrees, and pi radian is equal to 180 degree. And you know that this theta is arc length, which is 2 pi r over radius. You get 2 pi radian here, right? Sometimes they can ask you to convert, for example, कभी conversion करनी पड़ जाती है आपको. Convert 3.2 radians into degrees. How can you convert it into degrees? If, for example, they ask you to convert 3.2 radians into degrees, what will you do? आपके पास आपको पता है कि pi radian किसकी equal है? We will apply the ratio method here. This is 1 radian is equal to 180 over pi degree, and 3.2 radian is equal to 180 over pi into 3.2, and you get the required answer. Is that clear? अच्छा जी, उसके बाद let us talk about the angular displacement, right? We'll talk about the angular displacement. We have already talked about displacement in AS. You know what is displacement, right? But what is angular displacement? For example, I have here the y-axis. For example, this is the x-axis, right? And we have here, for example, this angle is theta 1. And for example, this angle is theta 2, right? And we have this arc which is going on like this. ये arc बनती जा रही है, ये particle है which is traveling all the way like this, and like this. This angle here is theta 1, this angle here is theta 2, right? अगर आप गौर करें तो ये जो चीज है ये what is this? If this is theta 1, this is theta 2, what is this? This is angular displacement. This here is the angular displacement, and we call this delta theta. So delta theta can be written as theta 2 minus theta 1. ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको delta theta as theta 2 minus theta 1. And we can write angular speed as, what is angular speed? If अगर आपके पास displacement है तो displacement को अगर आप time से divide कर देंगे तो angular velocity आएगी, लेकिन हम इसको angular speed कहते हैं. Angular speed अगर किसी certain direction में हो तो उसको हम कहते हैं angular velocity, right? So angular speed is what? It has a special symbol which is omega. इसका एक special symbol होता है omega, and it is defined as the angle swept out by the radius per unit time. ठीक है, omega is defined as the angle swept out by the radius. मतलब आपके पास ये जो radius है, जितना angle swept out sweep कर रहा है time में, इससे speed होती है distance over time. तो ये angle को अगर हम time से divide करते हैं तो angular speed आ जाती है. ये angular displacement over time होगा. ये angle जो है ये delta theta है, ये वाला. This is delta theta. तो अगर आप इसको delta theta को delta t कर देंगे तो angular speed आ जाएगी. जैसे एक स्पीड को हम डिस्टेंस ओवर टाइम करते हैं तो एंगुलर स्पीड को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करते हैं. दिस इज इन रेडियन, दिस वन इज इन सेकेंड्स.
So what happens is that the SI unit for angular speed is what? Radian per second. It is the angular displacement over angular time that gives you the speed. अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि angular speed ये है, तो angular velocity क्या है? तो angular velocity is just angular speed in a given direction. ठीक है, angular velocity is the angular speed in a given direction. And you should know that if you're talking about given direction, it can be either clockwise or anti-clockwise, right? For example, clockwise or anti-clockwise. Okay, let's talk about angular velocity. What is angular velocity? You can also write angular velocity as the rate of change of angular displacement. But basically, angular speed पे ज़्यादा focus है. So angular speed है that is most important, right? So you should know that angular velocity is the rate of change of, this is the another way to write it, right? Angular velocity is the rate of change of angular displacement. अच्छा, अब आपके पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, राइट? और फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास एक रोटेटिंग बॉडी है, लाइक इन अ मेरी गो राउंड और इन जो फन प्लेसेस होती हैं वो, जैसे वो कप्स जॉयलैंड वगैरह में कप्स मूव कर रहे होते हैं. आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल अम्यूजमेंट पार्क में, this is one point B and this is one point which is A. It is a rigid body and the particles are rotating on a rigid body, right? Now, this angle here is, for example, theta B, and this angle here is theta A, right? ये theta B और ये theta A है, और इनके दरमियान में जो एंगल है ये एंगल होता है अल्फा. मतलब ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस कांस्टेंट जा रहा है. This angle is theta B, this angle is theta A, and we have here the angle alpha. So basically we have theta A minus theta B is equal to alpha, which is a constant. आपके पास पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और उनका डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है. अच्छा, अब अगर मैं थीटा ए को सब्जेक्ट बना लूं and I write here theta b plus alpha, this does not change the equation. The equation is the same. And if I write it like this, delta theta a, alpha is a constant, it is not changing. Theta a and theta b are variable. What I do is I divide this by delta t. I divide it by delta t. कांस्टेंट को अगर आप असल में ये आपने मैथ्स पढ़ा हो, कितने लोग मैथ्स पढ़ते हैं? आप में से सब पढ़ते हैं, तो उसमें आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी. तो अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें तो वो जीरो होता है, मतलब कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज नहीं होता. तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इट इज कांस्टेंट. सो दिस थिंग गोज टू जीरो एंड दिस गिव्स अस ओमेगा a is equal to ओमेगा b. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो जितने पार्टिकल्स होंगे, irrespective of their positions, they would have the same angular speed. Irrespective of their position, if this is C, this is D, it can be E here, उन सबकी angular speed, अगर वो बॉडी पर पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो उनकी angular speed सेम होगी.
इसका ग्रेडियंट कुछ नहीं होता, इसका ग्रेडियंट 0 होता। ठीक है, बाकी सबका आपके पास देखें, आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालें तो आपका ग्रेडियंट सिर्फ m है, c का कोई मतलब नहीं, इट्स अ कांस्टेंट, राइट? सो this what it shows here is that hence the angular speed of all particles, ये हम एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अम्यूजमेंट पार्क में डिफरेंट कप्स रोटेट कर रहे होते हैं, सबकी एंगुलर स्पीड सेम होगी, लेकिन सबकी लीनियर स्पीड डिफर कर सकती है, वो हम आगे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो रेडियस पे डिपेंड करती है। मैं लीनियर स्पीड का आगे जाके बताता हूं, अभी हम उस पर नहीं आए। Hence the angular speed of all particles in a rotating rigid body is the same. Omega is the same everywhere, right? So far we talked about the angular displacement, we talked about this very important formula, इसको हम S is equal to R theta भी लिखते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होगा डिफरेंट क्वेश्चंस में। हमने ये भी देखा कि थीटा 2 पाई रेडियन है एक सर्कल के अंदर। हमने ये देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा थीटा है, एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा है, और हमने ये भी चेक किया कि ओमेगा जो है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। We have here a circle like this, or this is the y-axis and this is the x-axis that we have. This particle here is moving in a circle and it reaches at this point here. This angle here is theta that it has covered. अच्छा, इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये है s, और मैंने आपको बताया था कि रेडियस है, और ये जो लीनियर स्पीड होती है दैट इज टेंजेंशियल, टेंजेंट होती है हर पॉइंट पर। दिस लीनियर स्पीड इज actually tangent at every point. It is tangential, right? As you can see here. ठीक है, ये आपके पास एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। This is the particle that is moving in a circle. This is the radius. This is the angle theta. V is here. We know this very well that theta is equal to s over r. Theta is equal to s over r. And we also know that s is equal to r theta. ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम देखें इसको, हम देख सकते हैं डेल्टा s is equal to r delta theta, because r is constant, लेकिन थीटा भी वेरी कर रहा है, s भी वेरी कर रहा है, s बढ़ता जा रहा है, थीटा भी बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं, मैंने दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन गया, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। दिस इज व्हाट, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या होगा, खाली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी, राइट? And this is the rate of change of angular displacement. This is, as you said, angular velocity. And we get a formula which is V is equal to R omega. ठीक है जी, this is V here is equal to R omega. V here is what? That is the linear speed. R is the radius,
and omega is the angular speed or angular velocity if you specify the direction as well. V is equal to r omega, बहुत important formula. ठीक है? S is equal to r theta, V is equal to r omega, and you should know that in time t what happens. इसको आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि in time t, in time delta t what happens, the object moves along an arc length delta s. ठीक है, टाइम टी में क्या हो रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है चीजें कि टाइम टी में आर्क लेंथ जो है वो डेल्टा एस कवर कर रही है एंड स्वीप्स आउट एन एंगल delta theta, right? So you have here delta s is equal to, अभी हमने डिस्कस किया r delta theta और हम delta t से डिवाइड करते हैं तो वही चीज आ जाएगी. That is v is equal to r omega. It's not very difficult. क्योंकि ये दो फॉर्मूलाज हमने यूज किया. ठीक है, v is equal to r omega, s is equal to r theta, और मैंने आपको बस थोड़ी सी एक दो चीजें और बतानी है. अच्छा, we have here a circle like this. This angle here is 2 pi radians, and you should know that if this angle is 2 pi radian, इसको कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड कैपिटल टी लगेगा. ठीक है, सो टाइम फॉर वन कंप्लीट oscillation is capital T, and you know that you can write omega as delta theta over delta t. तो हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे पूरे सर्कल के लिए? 2 पाई, और डेल्टा टी की जगह हम लिखेंगे कैपिटल टी. तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाती है that omega is equal to 2 pi over capital T. और अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करना चाहते हैं, then you know that the frequency is 1 over time period. And you can write here f is equal to 1 over capital T, and this becomes omega is equal to 2 pi 1 over t, and you get what? You get omega is equal to 2 pi, this 1 over t is f, and you get another formula here which is omega is equal to 2 pi f. ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड हियर इन. ठीक है, और जैसे हमने आपके यहाँ पे डिस्कस किया कि ओमेगा 2 पाई बाय टी है, और आप अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा में इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं आप r इंटू 2 पाई बाय टी. सो दिस बिकम्स 2 pi r over capital T. This is another formula that you can get. So I hope you understood the concepts.